गज़ा में 2.5 महीने की अंधाधुंध बमबारी के बावजूद हमास के कब्ज़े से अपने शहरियों को बग़ैर बातचीत के छुड़ाने में नाकाम रही इसराइली हुकूमत को अपने मुल्क में भी शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। हमास के पास यरगमाल बने 3 इसराइली शहरियों के अपने ही फ़ौज की फायरिंग में मारे जाने के बाद तो जैसे यरगमालियों के रिश्तेदारों के सब्र के बांध ही टूट गए हैं। हालांकि मज़कूरा वारदात पर इसराइली फ़ौज ने अपनी गलती मानते हुए इसे गलतफहमी का नतीजा करार दिया है और इस मुश्किल वक्त में आवाम से उनकी हिमायत तलब की है। Horrible day. You're right, Rosie. It was a tragic event. We're fighting right now very extensively, also in Sajaiya and also in Jabalia. We're fighting against terrorists who are fighting on, sadly and tragically, also in civilian clothes. They're not wearing full kit. 3 people approached our forces and they were misidentified, or they were abandoned, or they got away. This is the nature of this horrible conflict of fighting a army, or the Hamas, who are not behaving like an army. They're fighting us with jeans and t-shirts. Tragic event, Rosie. लेकिन इसराइली अवाम अपनी हुकूमत या फ़ौज की बात सुनने को तैयार नज़र नहीं आ रही है। इसराइली अवाम ने एक बड़े एहतजाजी जुलूस का एहतमाम करते हुए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन याहू का मुआख़ज़ा यानी इम्पीचमेंट करके उन्हें ओहदे से फ़ौरन हटाए जाने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ निहत्थे यरगमालियों को फ़िलिस्तीनी समझकर गोली मारने के बाद इसराइली फ़ौज का ये दावा झूठा साबित हो गया है कि वो सिर्फ हमास के ख़िलाफ़ लड़ रही है, आम फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नहीं है। बरतानिया की MP क्लॉडिया ने इस जंग में इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी है। Even in its response to this petition we are discussing today. Last week we saw the shameful spectacle of the UK being the only member of the UN Security Council to abstain on the Council's motion for a ceasefire in Gaza. The scale of bombardment of Gaza and loss of civilian life requires immediate action, and I'll not be an accomplice. Collective punishment is a war crime. Forcible transfer is a war crime. Denying food, water and electricity are war crimes. The bombing of refugee camps, schools and hospitals are war crimes. Consequently, I have signed a petition along with other parliamentarians worldwide and civil society to the International Criminal Court to investigate and prosecute war crimes by Israel. The International Initiative Justice for Gaza calls on the International Criminal Court to investigate and prosecute the Israeli government for crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The question would be, why is the government not even participating in the collective call for evidence issued by the International Criminal Court Prosecutor's Office? The UK can no longer sit on its hands while Gaza is starved, massacred and bombed if it wishes to count itself a civilised nation. The atrocities that happened in Israel on October the 7th and Israel's trauma cannot be a free pass to indiscriminately kill and bomb innocent civilians in Gaza. How many more must die? I am asking the government to advise in detail what concrete steps it is taking to bring about an urgent end to hostilities. What does it know about Israel's ultimate goals in Gaza? And in particular, what steps is it taking to pressure the Israeli government to stop bombing civilians and destroying vital civilian infrastructure? What is it doing to call for a permanent and lasting ceasefire? Just saying government is calling on Israel to minimise casualties simply will not wash when it is clear to all that there is no restraint and that many thousands more will die if things continue as they are. इसराइल के हमायत के ख़ुद को ज़ायोनिस्ट तक कह चुके अमेरिकी सदर बाइडन ने भी तस्लीम किया है कि बेदरीग बमबारी के सबब इसराइल बैनुल अक़वामी हिमायत खो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी सहारा।